Assalamu alaikum. Okay, next video is about this video is about these uh, pages: privacy policy and written policy, terms and conditions, shipping and delivery, seals verification. You don't need to have this one, but I like to have this one on my store, so I use this a lot. Anyways, similarly आपको इन pages का content चाहिए होगा, you can hire a content writer, or instead you can maybe use one of mine. इनको बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है. और these pages, you need to have these pages to be set as no index, so Google don't index these, and these pages are not that important for Google, so you don't need to have these indexed by Google. So हम इनको पेज को इनका कंटेंट यूज़ करते हुए इनको डालेंगे, and obviously you need to open these and read these first, and change, make the necessary changes wherever you need to. For example, policy page के अंदर there are portions where you can where you will change the email address like this, or company name. So for now I'm just gonna copy and paste this whole thing. So let me just move it to another screen. Let's see. Okay, by the way, ये helpful links जो है, you don't need to have these on the top. You can just have these on the bottom like this. Currently I copied these all from the back foot, as you guys might have remembered. Anyway, so I'm just gonna make another menu and call it helpful links. Okay. I can't find the one here, but let's just add this. I want to find this one, privacy policy, but it's not already here. So written policy, terms and conditions, shipping and delivery, seals verification. Okay, that's good. I think we are missing one page. I'm just gonna search for it. Okay, apparently this page is not created, so I'm simply इसको add new करके create कर लेते हैं. Actually this is the one here, and let me just publish it instead. Now it should be appearing from here. Because I think जब तक पेज ड्राफ्ट में है वो उसको यहाँ पे सर्च नहीं करता, नॉट्स हियर. So I'm just gonna add this and move it on the top like this, and maybe we can have a contact us page here as well, because we removed that from the top. So simply आपने सर्च करना है यहाँ पे पेजेस का नाम, और वो simply यहाँ पे आ जाएगा. So let's just use this, and okay, I'm just gonna save. इसको बेसिकली जो है मैं फोल्डर के अंदर अब यूज़ करूँगा. अब सो सिंपली जाना है प्रेजर के अंदर एंड पेज ब्लॉक, और आई एम नॉट श्योर व्हाट थीम्स यू आर यूजिंग, बट यू विल बी सेटिंग अप फ्रॉम अपीयरेंस विजेट्स. सो यहाँ पर आपके जो है सिंपल फूटर का ऑप्शन आ रहा होगा, फूटर 1, फूटर 2, फूटर 3. सो सिंपली आप जो है इसको फूटर 2 के अंदर डाल देंगे. यहाँ पे इसी तरीके से बेसिकली सेटिंग हुई होती है. दिस इज़ फूटर 1, दिस इज़ फूटर 2 एंड फूटर 3 विजेट्स. सो because in Impreza we don't have that, so I'm just gonna close this and add it from here. Okay, let's just copy. Okay, यहाँ पर एक element है, this is the one, WP custom menu. You can either use this or you can just change these links directly. I'm just gonna try this one and see the design looks. If it's good, obviously I'm gonna use this one. Otherwise I will use the same design, this one, and I will just add the hyperlink on each of these. So let's just see, let's just save it and update.
and I'm just gonna refresh this page and see how it looks. Okay, I think it looks good. Only the bullet points is maybe missing here. Otherwise, I think it looks fine for now. So let's just delete. And hit the update button again, and I'm gonna refresh. And for these top 4 pages I do have the content, and I will share it with you guys in the course content. So I have one policy, terms and condition, and uh, this one might be for the return policy, I'm not sure right now. And this is the terms and condition. Let's see. Okay. By the way, अगर ये आपको समझ नहीं आएगा तो obviously you need to have your content writer write these pages. And yeah, by the way, ये जो content मैं use कर रहा हूँ, we are going to set these pages as no index, because we don't want Google to find out we are using the same content which has been used from their website. I think, and you need to add the spacing between this, so I'm just gonna press enter here. Okay, yep, we are good here. Let's just add some content. So let's say मैं इसके page का content डाल रहा हूँ. I'm just gonna edit the page. You didn't need to have don't need to have the set it up with the image and all that, because these policy pages are simple as just like this. So I think this is the content जो WordPress में अब आजकल default में आ रहा है for the GDPR purpose. So I think we can have this, but on the top of that we can use this page, use this content. So I'm just gonna copy this whole thing. By the way, you guys need to go through this whole page and change maybe the link and the the phone number and the email address which has been mentioned in this document. So yep, for now I'm just gonna copy and paste. Okay, and now I'm just going to hit the update button. By the way, you need to have these pages to be set as no index. So what you will do, you will just click here. आप यहाँ पर आएंगे, इसको कर देंगे no, and you will set this to no, and select these all maybe. So basically Google इस पेज को जो है अपने सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं करेगा, but ये पेज आपकी वेबसाइट में लाइव होगा. Let's just refresh this. So similarly in बाकी pages का जो भी content है वो इसी तरीके से copy paste हो जाएगा. I think I just have the policy page and the terms and condition. I do feel like these are the same for these two. I'm just gonna open this and see. Yeah, ये same content है. So actually let me just remove this. So basically I have the privacy policy page and just the terms and condition. बाकी के जो रिटर्न पॉलिसी पेज है, I will try to find the content for you guys so you guys can use it. Otherwise obviously you guys need to come up with your content writer. You guys need to hire a content writer and have him ready the content for the remaining pages. So anyways, I'm just gonna refresh, and I do feel like adding this space. ओके, तो बेसिकली ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर पेज आ गया. ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम बेसिकली इस पेज पे पहुँच जाएंगे. नाउ सिमिलरली दूसरे पेज के भी जो कंटेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सिमिलरली इसी तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगा. सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस वन. दिस वन इज़ प्रीटी सिंपल, जस्ट लाइक द वन वी डिड राइट नाउ. सो
but for the sake of this video I'm just gonna copy this whole content and paste it in front of you guys. By the way, still you guys need to go through the content and read it and see. You guys might need to change the company name and maybe add some links and change the email address or maybe the phone number, but for now I'm just gonna copy and paste this. So इसको बंद करते हैं, ये इसको भी बंद करते हैं. Let's actually refresh this. I'm just trying to add the gap here and see if it's equal to this. So okay, थोड़ा सा I guess ज़्यादा है. Okay, let's just 23. Okay, save changes, update, and for this one I'm just gonna copy and paste the content. Obviously आपको जो है ये section वाला जो वर्ड है वो delete करना है, and I would advise you to have all these headlines in the h3 tag instead of h2 or h1. So yeah, and so I'm gonna put these all to h3. By the way, if you guys are wondering कि हम इनको no index पे क्यों set कर रहे हैं and why we don't want Google to be indexing these pages, because we are definitely copying this content and it has been used on many other websites. That's why we are doing it. So that's, and I'm just gonna save this. ओके ये भी इसी तरीके से पेज आ गया है और उसको भी हमने नो इंडेक्स पे सेट कर दिया. एंड for the return and policy and shipping and delivery, I will try to find the content for these two. I think I have it written in the back foot, so I'm just gonna copy it from there. So yeah, this is how you will be doing these pages basically. So ये मैंने आपको करके बता दिया and ये दिखा दिया. I'm just copying and pasting the content, and for these three I'm actually going to copy it from my old website. Return policy and shipping and delivery and seal verification. With this seal verification page, obviously you guys need to have your website scanned first from all of these resources, and वहाँ से आपको private link मिल जाता है. Basically you need to have the that link here, because currently अगर आप इसका link देख रहे होंगे, so it's actually have the backfoot link in the middle. So yeah, I'm just gonna copy and paste this content. Same thing for the shipping and delivery and seal verification. Okay, to remove this thing, ये simply आपके पेज के अंदर basically in spacing ऐड कर देता है. So
बिकॉज आई नीड टू रिमूव इट। आप सिंपली किसी भी कोड एडिटर में जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके कंट्रोल एच दबाकर यहाँ पर आप उसको रिप्लेस ऑल विद नथिंग कर दें, यू नो दैट वे इट विल बी रिमूव्ड। Okay, for now I'm just gonna go with this one and I'm gonna remove this email. And let's see what's and I have to set this to no index as well. For the shipping and delivery, it's the same thing. I'm just gonna copy this content. Okay, शिपिंग एंड डिलीवरी टैक्स पे क्लिक करके विजुअल कर लेते हैं। वो सारी सेटिंग जो है उसी हिसाब से आ जाएगी। मैंने इसको इस तरीके से इस वजह से उठाया बिकॉज यू नो अदरवाइज़ में कंटेंट का टेबल जो है मुझे अलग से बनाना पड़ता। एनीवेज सिंपली मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। नाउ आई एम जस्ट गोना सेट दिस टू नो इंडेक्स एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉइंट यू नो कि हम इन पेजेस को इंडेक्स करें। नो वन इज़ रियली सर्चिंग फॉर दीज पेजेस फ्रॉम द गूगल। So this one is done, this one is also done, so I'm just gonna remove this tab, this one might take a while because you know अगर आपको इसी तरीके से section wise बनाना है, but this page is you know completely not necessary. So if you wanna have this page you can just have it, otherwise you know just maybe skip this one. So but for now because I need to have this page, so I'm just gonna click edit. ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कॉलम वाइज जो है हमने सेटिंग सारी करी हुई है, तो हमें भी वहाँ पे कॉलम वाइज ही रखना पड़ेगा। लेट्स जस्ट गो बैक इन एडिटर, एलिमेंट, रो एंड सेट दिस टू लाइक दिस एंड आई एम जस्ट गोना ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। Okay, and let's just do this. For now I'm just gonna copy this same content. Obviously you guys need to change this, otherwise if you guys are copying this content you know maybe just set this page to no index ताकि आपके पास जो है डुप्लीकेट कंटेंट का बेसिकली इशू ना आए। ओके, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है उसको वो उस पेज के अंदर आ जाएगा एंड लेट्स सी। ओके आ गया। नाउ सेट द अलाइनमेंट टू दिस, वी डोंट नीड टू हैव यू नो एनी लिंक। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। बाय द वे इफ़ यू नीड टू हैव द लिंक, आई डोंट थिंक इसके ऊपर मैंने कोई लिंक नहीं लगाया था। एनीवेज सिंपली अगर आपने बटन ऐड करना है यू विल जस्ट सर्च फॉर बटन और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आपने फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लिया। ओके, करंटली वी ओनली हैव दीज टू स्टाइल और ये स्टाइल इम्प्रेजा के अंदर मैंने आपको दिखाए थे। थीम ऑप्शन से जाके आप लोग सेटिंग करते हो इनकी और ये वहीं से डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। सो लेट्स सी इफ यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ ग्रीन पैटर्न डिज़ाइन बिकॉज आई रियली लाइक द वे दीज आर present. So buttons में हम लोग ये दो तरह के हमारे पास आ रहे हैं। let's just add another one and I'm gonna see okay, what color this one is using. So this is the one. So okay, यहाँ पे हमने इसको कलर को ऐड कर दिया। actually this one is to say white. Okay,
एंड सिमिलरली होवर पर हम इसको जो है थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, मे बी जस्ट लाइक दिस वन. And we don't need to have these. Okay, I think this is good for now. Or I don't want to play around with these settings. So let's just change this to seal. Once you're done, obviously you need to refresh this page so it pops, you know, so yeah, ताकि आपका पेज जो बटन जो आपने बनाया वो इसको डिटेक्ट कर ले. For now I'm just gonna play around with other setting because I think ये अभी अगर हम इसको सेव करेंगे alignment इनके ऊपर नीचे होगी. So I'm trying to find out column content position middle. So I think that way दोनों की जो position है वो उसको जो है middle में कर देगा. Okay, let's just update this page and visit this page and see what we have. Okay, I think this looks better and I just need to change this button. This is the one, and the text I want to use for the button is this, and maybe this icon. So what do we have here in the icon? Icons के लिए basically आप icon पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप icon की लिस्ट खोल लेंगे. यहाँ पे इस तरीके से सारे आ रहे होंगे. यहाँ से आपने जो भी select करना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है. I'm just gonna go try to find out if there is anything with the seal. I can maybe use this as well. Maybe try security. Okay, I like this one. It says pro for some reason, but I'm just gonna try it anyways. Okay, it's appearing, so let's just have it. गैप को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिसेंट लगे. भी बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट से वो मिल गया. लेट्स जस्ट हैव दिस लाइक दिस and I'm just gonna hit the update button and refresh the page again. Okay, this looks better now. Now I'm just gonna clone this whole section, और इस section को मैं थोड़ा सा grey color दे देता हूँ, just like this one. So ये is this is just extension called Colorzilla. You can have it installed via Chrome extension. So ये basically color picker है, आपको help करता है color select करने के लिए. So let's say I wanna use this background color. I will just select this, so it will copy it. This is the color. So let's just say I want to use this on this section. I'm gonna hit a bit and see if it's appearing properly. Okay, it does. I do feel like the gap is too much. Let me actually reduce the gap a bit. Okay, let's just change this to small and this one as well. सो बेसिकली अब सिंपली मैं इनका कंटेंट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दूँगा. तो बेसिकली इसी तरीके से जो है आपकी जो हेल्पफुल लिंक्स हैं ये सारे डिज़ाइन हो जाएंगे.
सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई, but I felt like this needed to be done properly. So thanks guys. अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे जिसके अंदर बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे, फॉर्म का पूरा सेटअप करेंगे, देन फॉर्म के अंदर हम लोग रिडायरेक्शन सेट करेंगे. So when someone will fill out the form and they will be redirected to the thank you page. So thanks. Let's meet you guys in the next video. Thanks. Bye bye.